Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and today's question is a very standard question and an easy category question. Uh, Respective that working of one particular data structure, and that data structure is asked in each and every interview. Tell me the internal working of this particular X data structure. So let us read the question, then we'll see how we can solve this question. So we need to count the distinct elements in every window. Again, it's a sliding window technique we need to apply here. So okay. तो आप सोच रहे हो यार भैया कैसे पता चल जाता स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक टू पॉइंटर या फिर क्या है राइट तो उसके लिए मैंने एक डीएसी 360 शीट बना रखी है सारे बंच ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आप कर लो आपको भी समझ में आने लग जाएगा ठीक है एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन सो गिवन इंटीजर array of and a number k find the count of distinct elements in every window of size k in the array तो एक बार इनपुट एंड आउटपुट वेरीफाई करते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे राइट तो इनका कहना है कि साइज ऑफ के राइट साइज ऑफ के निकालते हैं एक बार सो 1 to 1 4 है राइट तो पहला विंडो होगा 4 एलिमेंट्स का दैट इज अरे एक सेकेंड यहाँ से बनेगा 1 2 3 4 राइट तो इसमें आप देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या है एक तो 1 1 2 है वन से 1 डिलीट इसको नहीं लेंगे 1 2 and 3 सो वी हैव 3 एलिमेंट्स अगेन इस विंडो में कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 2 1 3 4 अगेन 4 है तो 4 आंसर हो गया इस विंडो में कितना है 1 3 4 सारे डिस्टिंक्ट है सही बात है इस विंडो में कितना है 3 4 2 3 तो 3 3 दो बार रिपीट है सो टोटल काउंट वुड बी 3 राइट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन so what we can do here is that we can go window by window method one brute force इसका क्या हो गया brute force क्या होगा कि that you traverse that is you form iterate in each and every window iterate in every window right using two nested for loop that is from I equals to 0 till I less than n I plus plus right similarly आप यहाँ पे एक j for loop use करोगे that is j equals to I j less than k and then j plus plus right for each and every I you will form a window of k elements and in this here you will get the count of your distinct elements यहाँ पे या तो आप set use कर सकते हो hash set right or you can declare one count variable से आप ये चीज कर सकते हो these two ways will be there but again what will be the time and space अगर आप ये use करते हो two nested for loop and hash set तो time complexity would be O of n square and space would be O of k अगर आप ये method 2 मतलब brute force में if you use the method 2 that is 2 for loop and count variable then the time complexity would be O of n square and space complexity would be O of n so in each of the cases your time complexity would be O of n square so that is why this is the brute force technique मेथड टू क्या बोलता है मेथड टू ये बोलता है कि हम भी यही काम करेंगे हर एक विंडो में चलेंगे बट थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे दैट वी विल डू अ स्मार्ट वर्क हियर दैट मीन्स we will form the first window of k elements that is we're going to have a for loop going from I equals to 0 till I less than n not k right I'll show you how and we'll just keep on adding the elements in a map and not a set map is nothing but it's a structure of key value pair right so key will take an integer and value will also will take an integer here we will store the element unique elements again मैप और सेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है यार जो यूनिक एलिमेंट्स ही अलाउ करता है राइट अगर आप सेट को बोलोगे या मैप को बोलोगे कि मैं तुम्हें 2 दे रहा हूँ सो इट विल take a 2 in it. It will say, okay, I'm giving you 3 now, so it will add 3 also. But it will, if you say that add 2 again, it will not do it, right? Now, if you get the frequency of repeating elements, in that case, use a hash map, right? Where you store the elements as a key and frequency as the value, key value pair. ठीक है हैश मैप में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए which is nothing but get or default. If you code in Java, this function is very handy, right? इंटरव्यूज में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए आई रिपीट टू whatever number of interviews I have given in each and every interview I was asked to explain the internal working of a hash map का खूबी क्या होता है यार यहाँ पे आप सर्च ऐड एंड सर्च आप कंटेन्स की से कर सकते हो राइट ऐड एंड सर्च दोनों ही ओ ऑफ वन में होता है जबकि आप इफ यू सी इन द एरे यू कैन ऐड इन ओ ऑफ वन at the last of the index of the element but if I say you to search in an array then you will take O of n time in an unsorted array and log n time for a sorted array using binary search but hash map does thing in O of 1 this is a very good question and it is just to check your curiosity कि ठीक है आपने hash map use तो कर लिया you've been using hash map in your solution but do you know how this work internally right as a developer point of view if I told you to implement a hash map
हाउ वी विल डू सो, राइट? इम्प्लीमेंट अ हैश मैप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। ये दोनों क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको हर जगह पूछा जाएगा, ये राइट? मेरे मास्टर कार्ड के इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था। मास्टर कार्ड SD2 के इंटरव्यू में ये पूछा गया था। मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। सो व्हाट ऑल टॉपिक्स यू नीड टू बी familiar with: load factor, chaining, don't mind my handwriting, just listen my voice and you can write it yourself, open addressing, and linear probing, and quadratic probing, and double hashing. Again, don't mind my handwriting, just listen to my voice and you can write it down on your notebook. These terminologies, get yourself familiar with, right? And अगर ये terminologies आप समझा देते हो that how an hash map internally works, then you are good to go. Implement a hash map, again there is a very standard question on lead code और हमने अपने चैनल पे भी कवर किया होगा, you can see that. हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए बट ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। थोड़ा सा और डाइवर्ट होंगे यार, यही रीजन है यार कि हमने जो DSC 360 जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे अपने प्लेसमेंट के लिए, तो मैंने उसको काउंट किया एंड दैट कम्स आउट को वेरी गुड नंबर 360। एक सर्कल है, राइट? तो आपका A to Z यहाँ से 0 to 100 आप सारे क्वेश्चन, प्री रिक्विजिट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कवर कर लोगे। वंस दिस इज डन देन यू कैन गो फॉर योर लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या फिर कॉन्टेस्ट, राइट? बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। वापस आते हैं अपने दिस थिंग पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 को एंटर करेंगे विद इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी तो एक ही बार आया है तो इट्स 1। नाउ अगेन 2 would be entered, again the frequency would be 1 and 1, right? Again the third one will come and will say that हमारे पास तो पहले से 1 है, right? So increase our frequency to 2. Then again 3 आएगा and then 3 points to 1, right? Now we have entered the first k elements, or let's say the first window elements in a hash map. At this point of time we just need to add the map size, and map.size, we can get the size of the map using map.size, and we'll have an array list of answer and we'll just say add 3, right? What else? Once we move to the next window, that is my ith pointer is pointing to this index. Once I move to another ith pointer, again I will add this in my map, that is 4 comma 1, right? And I will remove the frequency of the first element of this array. So when I was at this point, can I get the window, the previous window first element? Yes, I can get by doing I minus k. तो I minus k पे जो एलिमेंट होगा that is 1, उसकी frequency को देखो, what is the frequency? It is 2, तो सबसे पहले इसको 1 से decrease करो, and if the frequency has been decreased to 0, remove the key itself. There is no point of having that key if that frequency has decreased to 0. तो हमने 4 को ऐड किया and 1 को रखा because the frequency still exists. What is the map dot size says? So it says 4. So 4 will add an answer. Now I'll move again. Now my I is at this point, right? And again, this was my previous window, right? This was my previous window, and my new window forming would be this one, 1, 3, 4, and 2. Again, I minus k, will do I minus k and remove my current window first element, that is 2. I will see what is the frequency of 2. It is 1, so I will decrease it to 0, and since it is decreased to 0, we will push it out from our map. So I am just scribble it here. Now we'll push this extra element, that is this one. Your I would be here basically, right? So 2 would be pushed. So 2 would be pushed again with a frequency of 1, right? And again you can see what is the number of elements it has: 1, 2, 3, and 4. So again 4 would be added. Similarly 3 would be pushed in the map. 3 again it has, so I will increase its frequency by 1. And and the next expression I would be here, and I minus k, this would be my current window. I minus k, I have to remove this element 1. So 1 has frequency 1, I will decrease it to 0 and I will push it out from the map. What is the number of elements in the map, number of keys in the map? So it is 3, 4, and 2, that is 3. So 3, 4, 4, 3 should be answer for this particular example. Yep, output matches. So we're gonna start ahead and code the solution. Let us pause this video here now and try to code this approach by yourself. Before moving ahead, what is the time and space? So we'll be pushing each and every element just once, so it would be O of n, or we can say we'll be visiting each and every element just once, so it would be O of n, and O of k as hash map, because we at any point of time there are maximum k keys in our map, right? In for rest of the cases, we are removing the first, and this is ensured because as we are moving forward to the next window, we are removing the previous window first element. Please pause this video here now and get your code completed. Okay. So let me get back. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक हैश मैप बनाएंगे यार. Let me write the hash map and then we can continue.
So that goes our first step, and now we're gonna just iterate for the each and every element in the array, right? तो हमें थोड़ा सा बस स्मार्ट वर्क करना होगा, हमें बस इतना हैंडल करना होगा कि at what point of time we need to add, right? After the end of the first window, we need to add our uh, map size into our array list, and for all, and then for all the respective i's. So first of all, let us add that particular element. So that's why I said uh, a very handy function get or default. तो हम put करेंगे इसको map dot array of I, and we will get the count of this. If this is present, then we will get the count using map dot get or default, and which element count you want. I want element count of array of I. If it is there, take it. If not, assign with 0 and do a +1, right? That's great. Now this we will be doing for first k element. So after the first k element, that if I is greater than equals to k, then we need to add the elements, of course, which will be getting handled by this thing, but we need to remove the first element of our current window as well. So we're going to use this element again. Sorry, we're going to use this statement again, and instead of doing a +1 for this I minus kth element, we will get the default count, that is using the I minus k again, and instead of +1, we'll do a -1, right? At any point of time, is if this element frequency uh, points to 0, that is array of I minus k. In that case, we're gonna remove it from our entry map dot remove array of I minus k, right? Makes sense. Now we need to add al dot add map dot size, right? But do we need to do it for all our eyes? नहीं. जब हमारे पास first window आ जाएगा, and that is after exact k elements, we need to do this. So I will just write if I is greater than equals to, since k is 1 base indexing, तो हमें 0 base indexing को follow करना है, तो k minus 1 करेंगे. Greater than equals to k minus 1, yep. Then we need to add this thing, and at last just say return our al. ठीक है, that is it. So instead of capital A, we'll have an array. So here we forgot to add. We are getting the frequency of our element, but it should be equals to 0, right? So we uh, have not mentioned this inequality, so now I mentioned it. I hope आपने कोड करते समय ये गलती नहीं की होगी, and मतलब टाइपो नहीं किया होगा basically. ठीक है, that is it for this solution. Let us hit the submit button, and we'll verify the expected, and we will verify the final submission. Great. ठीक है यार, ये क्वेश्चन हो गया. टिल देन कीप अर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस. फ्यू लास्ट थिंग्स कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से आए. हमने 550 डेज, आज मिलाकर 550 डेज ऑफ कोड हो जाएगा, राइट? एंड बीच में कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक हुई थी बिकॉज हमने ऑलरेडी 500 डेज ऑफ कोड कवर कर लिया था ऑन ईच एंड एवरी डे. बट फिर उसके बाद मैं सिग्मॉइड गया, एंड देन सिग्मॉइड से आई केम टू माय दिस मास्टर कार्ड, तो थोड़ा सा मेरे को गैप लेना पड़ा था. आप सारे जर्नी आप यहाँ पे देख सकते हो. मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर रखा है फॉर ईच एंड एवरी कंपनी. एंड सम वर्कशॉप्स आई हैव टेकन फॉर कॉलेजेस, वो यहाँ पर है. एंड व्हाट एल्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे. आप यहाँ पे मैप सर्च करोगे, आपको मैप का प्लेस मिल जाएगा. यू कैन गो थ्रू द टॉपिक्स. अगर आप टॉपिक्स वाइज देखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ पीओटीडी, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ. आप मेरे साथ रोज एक वीडियो देख के कर सकते हो. चलो, बाय बाय.